Am I audible? Everybody can hear my voice. Am I audible? Sir. Okay, let us wait for 2 minutes so that the rest of the student can join, and then we will start the class. Okay, so let us start today's topic. So today we are discussing. Last day we are discussing about the bridge rectifier circuit and its ripple factor and etc. etc. Today we are going to discuss about the transformer utilization factor. Uh, TUF of an rectifier. What does it means? In this TUF of a rectifier, we will discuss about the TUF of a full wave rectifier. Then we will tell about what do you mean by voltage regulations and these all things. Okay, so let us start today's class. So today's basic electronics class has been started, and just a minute. Yes, today is our 10/1/2022. So today we will discuss about transformer utilization factor.
So today we will discuss about transformer utilization factor. So what do you mean by transformer utilization factor? This today we will discuss. So the transformer utilization factor may be defined as the ratio of DC power delivered to the load and AC rating of the transformer secondary. So what is the definition? The definition is what is the definition? The definition is transformer utilization factor may be defined as the ratio of DC power delivered to the load and the AC rating of the transformer secondary. Okay. So mathematically how it is represented? Mathematically we can represent it by TUF equals to DC power delivered to the load by AC power rating of the transformer secondary. AC power rating transformer secondary. Okay. So that is equals to VDC into IDC by VRMS dot IRMS.
So that can be also written as assuming RL is much greater than RX for half wave rectifier that is equals to TUF equals to VM by pi into Im by pi by Vm by root 2 into Im by 2. What will be this? Im by 2. So simplifying we will get what TUF equals to 0.87 RL by pi square. Sorry. 2 root 2 by pi square. Solving, we get TUF equals to 2 root 2 by pi square. इसको सॉल्व करने के बाद आता है 0.287 that is equals to 28.7%. However, ideal value of TUO is 100% and practically practically it should be as high as possible.
possible. Now, if we take RF in our consideration, then what will happen? QF equals to 0.287 RL by RL into I. RL plus RL. Okay. So this is for the transfer utilization factor for a half wave rectifier. Everybody has understand? Now transformer utilization factor for our what? For our full wave rectifier. So write transformer utilization factor for full wave rectifier. So TUF of center tap transformer is collected for secondary and primary winding separately, and then the TUF is calculated. Average TUF is calculated. So first we will calculate for secondary, and then we will calculate for the primary, and then we will do what? We will do our average, and that is the TUF for full wave rectifier. So first write TUF of secondary windings. That is equals to DC load power by power rating of secondary. Okay, that is equals to IDC into VDC by IRMS into VRMS.
So substituting the value we get the values we get, what we get? TUF of secondary windage to Im by pi into 2 Vm by pi by Im root over of 2 Vm root over 2. Therefore, what we can write? Secondary TUF equals to 8 by pi square, that is equals to 0.812, that is equals to 81.2%. As we know, a full wave rectifier consists of two half wave rectifiers working independently and feeding a common load. Therefore, we can write TUF TUF of primary winding equals to 2 into TUF of HSW equals to 2 into 0.287. Thus, primary 0.574. So the average equals to TUF primary by TUF secondary.
equals to 0.574 plus 0.812. Okay, by 2. So that is equals to 0.693 or equals to 69.3%. So that is transfer iteration factor for full wave rectifier. Last was half wave rectifier, this was full wave rectifier. Any problem? Any problem? No, sir. Okay. So we are going to the next, that is voltage regulation. What do we mean by voltage regulation? So now voltage regulation. What? Voltage regulation. What do you mean by that? Anybody any idea voltage regulation? Anybody? So anybody no idea about voltage regulation? Okay. So let we start the variation of DC output voltage as a function of DC load current So the variation of DC output voltage as a function of DC load current is called the voltage regulation. Okay. The degree at which the power supply varies in input voltage under condition of load vibration
is measured by a term called known as voltage regulator. Voltage regulation is generally expressed in percentage. That is, voltage regulation, you can write voltage percentage voltage regulation is equal to V of no load minus V of full load by V of full into 100. Okay, what is voltage regulation? Okay, Okay, sir. okay. So further we can illustrate this by using Thevenin circuit for a half wave rectifier, where we will see the internal resistance of the power supply, and in the case is equals to Rs plus Rx. It may be also noted that the power supply which has good voltage regulation has a low power regulation, as an ideal power supply has a full load voltage full load voltage equals to its no load voltage, and hence the percentage regulation will be how much? The output. That means if I supply which has no load of 9 volt, and the full voltage of the circuit is 8 volt, then the percentage of voltage regulation or voltage regulation percentage will be 9 minus 8 by 8 into 100%. If what? If a power supply power supply has no load voltage of 9 volt and full load voltage is equals to of 8 volt. Then what will happen? This will be the answer. TUF. That is equals to 12.4. So I think everybody has understand the voltage regulation.
Yes, sir. Okay. So that was our rest of the chapter. Let us do some numericals on this. Let us do some numericals on this. Problems. Okay, so what is our problem? A full wave rectifier produces an RMS voltage of 10 volt from a 50 hertz line source and feeds a resistive load and feeds a resistive load of how much? 1100 ohm. If the filter uses a capacitance of C equals to 50 microfarad, find the DC voltage. DC voltage, comma, voltage regulation, and number 3, ripple output voltage. So how will do? Anybody any idea? Anybody any idea?
No response. Is it audible? Yes, sir. Okay. So peak value of voltage across the load given by VL max equals to root over 2 into VL RMS. That is equals to root 2 by 10, root 2 into 10, sorry. That is equals to 14.14 volt. Now VDC equals to VL max equals to IDC by 4 of FC. This is we know. So hence we can write I of DC 1100 plus 1 by 4 into 50 into 50 into 10 to the power minus 6. That is equals to 14.4. 14, sorry, 14.14. Or we can write IDC equals to 14.14 by 1200. That is equals to 0.01 triple 18, 118 ampere. So output DC voltage VDC equals to IDC into RL, that is equals to 0.0118 into 1100, that is equals to 12.964 volt. This is our first answer. Next is ripple voltage. That is represented by VR, that is equals to IDC by 2 into F into C, that is equals to 0.0118 by 2 into 50 into 50 into 10 to the power minus 6. That gives you 2.36 volt. So this is 2 done. Now ripple output voltage.
How much it will be? It is represented by VC RMS. Sorry, V of AC RMS. That is equals to VR by 2 into root 3. That is equals to VR equals to 2.36 by 2 root 3. That is equals to 0.6813 volt. And last is voltage regulation. Just a minute. Voltage regulation is equal to VL max minus VDC by VDC into 100. That is equals to 14.14 minus 12.6. This is 12.964 by 12.96 into 100. That gives you 9.07%. Okay, clear? Yes, सर एक sir. बार बैक साइड पे जाइए ना सर सर प्रीवियस स्लाइड में एक बार जाइए ना जा रहे बोलो सर वो छूट गया था सर लिखना था हो गया सर अच्छा So this is like this problem will come to you in examinations. In examinations like this problem will come to you. सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना सर? हाँ याद रखना पड़ेगा आपको. जैसे कि मैं एक कुछ कुछ सर्किट डायग्राम देखकर भी क्वेश्चन आता है तो रिपल फैक्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है मतलब डायोड की क्वेश्चन जितना भी प्रॉब्लम आता है डायोड करंट से जो भी आता है छोटा आता है पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आता है ये रिपल फैक्टर से तो एक डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसका भी एक एग्जांपल देते हैं प्रॉब्लम 2 यहाँ पर क्या बोला है an AC supply of 230 volt is connected to a half wave rectifier.
to a transformer having turns ratio ten is to 1 as shown in the below figure. Determine number 1 the DC output voltage, number 2 the peak inverse voltage of the diode, PIV of the diode. ब्रैकेट में लिखा हुआ है assume the diode to be ideal one. अब यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर एसी वोल्टेज दे रहा है वो 230 वोल्ट, ये है तुम्हारा V0, ये है लोड रेजिस्टेंस RL, ये है डायोड D, यहाँ से V2 आपको मिल रहा है और यहाँ से V1 आपको मिल रहा है। और इसका रेशियो बोल दिया गया 10:1। सो ये फिगर दिया गया है तुमको। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, given that n1 by n2 equals to 10. That means number of turns n1 by n2 10 is to 1, so that is 10. Next is primary RMS voltage, V1 equals to 230 volt. So we know transformer N1 by N2
equals to V1 by V2. So from here we can find out secondary RMS voltage. So secondary RMS voltage V2 equals to N2 by N1 into V1, that is 1 by 10 into 230, that gives us 23 volt. Continued. So now what? The maximum or peak value of secondary voltage is Vm, that is equals to root over 2 into V2, that is equals to root over 2 into 23. So that will get 32.5 volt. So number one, DC output voltage VDC, that is equals to Vm by pi, that is equals to 32.5 by pi. That gives you 10.3 volt. Next, number two, peak inverse voltage. Peak inverse voltage of diode. PIV equals to Vm, that equals to 32.5 volt. So this is one answer. This is another answer. Yeah. So these are the two answers. Clear? सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा ही आप लोगों को
क्वेश्चंस आएगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन भी दे सकते हैं। मैं हर तरह का चीज एक एक करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग इस मतलब मैं जितना टाइप दिखा रहा हूं इससे भी टाइप हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को 3 टाइप का प्रॉब्लम दिखा रहा हूं और मैं जो टोटल चीज है उसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जितना भी आता है इससे भी कुछ अलग सा भी आ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग घर में भी बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको रेक्टिफायर से आएगा, आएगा ही आएगा। तो घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग आपका प्रॉब्लम और थिंग अपना टीच मिनट का क्लास में आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे और डाउट क्लियरिंग क्लास एक अलग अलग रखेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद हम नेक्स्ट जगह पे चला जाएंगे और प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। अगर हम हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस यहाँ पर करेंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं होगा। तो जो लास्ट प्रॉब्लम है वो हमारा ये है, प्रॉब्लम 3। दिया हुआ है द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF of a diode is 20 ohm. This diode is used in a half wave rectifier. Circuit. The applied input voltage is V equals to 60 sin omega t, and load resistance RL equals to 800 ohm. So determine number 1 IM, IDC, IRMS. Number 2 AC power,
input and DC power output. Number 3, आउटपुट डीसी वोल्टेज एक ही चीज है, डीसी पावर आउटपुट अलग सा है, आउटपुट डीसी वोल्टेज। और लास्ट है number 4, rectification efficiency. तो इसका कंटिन्यूड पार्ट। So understand the question. The forward resistance of RF of a diode is given. It is 20 ohm. The diode is used in a half-wave rectifier circuit. Okay, that is given. The applied input voltage is 60 sine omega t. I have not given the total value. I have given the equation. The load resistance RL is equal to 800 ohm. Now we have to find out the first one, that is IM, IDC, IM, RMS. Number 2, AC power input and DC power output. Number 3 is output DC voltages. And number 4 is rectifying efficiency. So question is understandable? क्वेश्चन में कोई शंका नहीं है? कोई जवाब नहीं? No, sir. ओके। So solution. So what is given to us? Given that V equals to 50 sine of omega t. Sorry, 60 sine of omega t. So hence what we can write? Hence we can write maximum, that is 60 volt. Now we know that Im equals to Vm by RL plus Rf. So substituting all the given values, we get
What do we get? Number one, Im equals to 60 by 800 plus 20. That is equals to 0.06 ampere. IDC equals to Im by pi. That is equals to 0.06 by 3.14. So that is equals to 0.0194 A. So please go through this calculations value. I have done it, but sometimes mathematically I am a person, so sometimes mathematically I could be wrong. So please go through it. Okay. IRMS equals to Im by 2. So that is equals to 0.06 by 2. So that is equals to 0.03 A. So this is first answer. This is second answer. This is third answer. Now we go to the next one, that is out AC power input and DC power output. So number 2. AC power input. That is represented as P of AC. So that is equals to I RMS whole square into RL plus RF. So putting all the values, we have what we have, P of AC equals to 30.5 into 10 to the power minus 3, this value, whole square into 820, 820. तो ये हमारा आता है कितना, 0.763 वाट, सॉरी वाट. फिर मुझे चाहिए है डीसी पावर आउटपुट. सो डीसी पावर आउटपुट, that is P of DC, that is equals to I square DC into RL. So this is the I square DC.
this value. So I am putting this here. It will be 19.4 into 10 to the power minus 3 whole square into 800. That will be 0.301 watt. So these two are the second questions. Yes, AC and DC. So this is another answer. This is another answer. Next, number 3. Number 3 is output DC voltage. So output DC voltage. Number 3. Output DC voltage is equals to IDC into RL. So that is equals to 19.4 into 10 to the power minus 3 into RL equals to 800. So that will give you how much? 15.52 volts. Now the last, rectification efficiency. So number 4, the rectification efficiency. So rectification efficiency is expressed as what? Eta, that is equals to PDC by PSC into 100. So that is equals to 0. How much? PDC, PSC. 301. 0.301 by 0.763. 0.763 into 100. So that is gives you how much? 39.5%. So this is the answer, and this is the answer. So this is number 3 problems solution.
Okay, everybody. Yes, sir. तो आप लोगों को तीनों प्रॉब्लम हमने कर दिया है आज रेक्टिफायर के ऊपर। तो अब आपको ये करना है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बोल सकते हो या चैप्टर भी बोल सकते हो, जिसका नाम है ब्रेक डाउन डायोड्स। नेक्स्ट मॉड्यूल है सर। नेक्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हो, ब्रेक डाउन, जहां पर हम लोग जेनर डायोड या नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ब्रेक डाउन क्या है? So if we consider a rectifier with a suitable filter, then it will become a good source of DC output voltage. However, the main drawback of such a power supply is that the DC output voltage varies with the variation of load resistance or input voltage. Hence, if the applied input voltage increases, the DC output voltage also increases in the same way. So if the load current increases, the output voltage falls because of the voltage drop in the filter, rectifier element, etc. However, most of the electronic applications, it is desired that the DC output voltage of a rectifier must remain constant, irrespective of the variation in input AC voltage or load. Hence, to ensure this, a voltage stabilization or regulation device known as voltage stabilizer is used. Although there are several voltage stabilizing circuits which may be designed, but in this chapter we will discuss only Zener diode as a voltage stabilizer or a voltage regulator. Understand? सर इस टॉपिक को नेक्स्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पे, पर प्रॉब्लम है कि अभी भी 24 मिनट तुम्हारा क्लास हुआ है, तो अभी भी मुझे इस क्लास को तो 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स लेना पड़ेगा। तो अगर दो पीरियड का रहता है ना सर आपका? मेरा 2 पीरियड है। हाँ तो 50 मतलब 100 मिनट 120 अभी मिनट्स तो सर अभी ब्रेक का टाइम हो जाता ना सर, इसलिए बोले। नहीं, 12 से 1:40 मेरा क्लास है, अभी बज रहा है देखो 1:26, तो ब्रेक का टाइम तुम बोल हम लोग सकते हो, का पर ये ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा था क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट क्लास भी है सर। हाँ तुम जो बोल रहे हो वो मालूम है, पर पहले ही जो ठीक हुआ है कि ये शेड्यूल 12 से 1:40 तक जाएगा। तो अगर इसके लिए अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो कि पहले ये जो आपका लंच का टाइम आता है ये कुछ और आता है, तो इसके लिए पहले बात करना पड़ता था ना, क्योंकि मैं तो ये सब्जेक्ट नहीं लेता था, ये सब्जेक्ट एक्चुअली लेता था आपका मैडम, तो मैडम आज नहीं है इसीलिए मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया। तो मैं तो एज पर मेरा शेड्यूल और आप लोगों का जो मार्च क्लास है, क्योंकि सीएससी है, इलेक्ट्रिकल है और ईसी है, 3 लोगों का मार्च क्लास, वैसे शेड्यूल को तो मुझे पकड़ाना पड़ेगा ना,
क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैडम के क्लास के टाइम पे मुझे क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि मैडम के क्लास के टाइम पे अगर लेंगे तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो और दूसरा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं तो तुम्हारा सब्जेक्ट तो सिर्फ लेता नहीं। तो इसीलिए इस टाइम पे आप लोगों का जो एचओडी सर है शुभेंदु सर, उसके कंसल्ट करके हमारा जो एचओडी सर है सुजीत कमारू सर का और प्रिंसिपल सर के परमिशन लेकर ये मैंने स्लॉट निकाला है, क्योंकि एक्चुअली 12:50 से हम लोगों का टिफिन का ब्रेक रहता है। तो 12 से 41 अगर मैं क्लास लूंगा तो ये तो सबका प्रॉब्लम होगा, मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं भी ब्रेक पे नहीं जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने यही नतीजा लिया है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ठीक है हम 10 मिनट कम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि आपका टिफिन का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास भी है। ये तो आप लोगों को जानना चाहिए था। और अगर ये प्रॉब्लम फिर से अराइज करता है तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग शुभेंदु सर से बात कीजिए, आपके एचओडी से, वो लोग मुझे शिफ्ट कर दीजिए कुछ ऐसा जगह, ताकि हम लोग क्लास ले सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा हाथ में नहीं है, ये तो मुझे कॉलेज से दिया गया है शिफ्ट। अब 12 से 1:40 तक मुझे क्लास लेना और मुझे लेंगे, तो इसमें अगर किसी का टिफिन का प्रॉब्लम हो, इसका ब्रेक का प्रॉब्लम हो, वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। और अगर आप लोग पूरा क्लास, सर अभी 1:33 हो चुका है, 7 मिनट सिर्फ बचा हुआ है सर, इसलिए बोले कि इसको नेक्स्ट दिन स्टार्ट करिएगा। नहीं, जब तुम बोले थे तब 1:33 नहीं था, तब उस मैंने समय इस 21 था सर। तुम जो बोलते हो ना वो समझ के बताओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर ये सिलेबस खत्म नहीं होता है ना, तब तुम लोग ही कॉलेज में आकर बोलते हो कि तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अब तुम लोग अगर सिलेबस खत्म नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखो इतने देर तक मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतने इतने टाइम तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं था। जब तुम लोगों का छुट्टी का टाइम लगता है तब रिस्पॉन्स आ जाता है, जब तुम्हारा अटेंडेंस का टाइम आता है तब रिस्पॉन्स आ जाता है। और बात बात पर मैं जब आप लोगों को सवाल पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा था, तो बीच बीच में आप लोगों का किसी का रिस्पॉन्स नहीं होता। तो ठीक है, मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा, 10 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर छोड़ूंगा। जिसको लीव करना है उसको लीव कर सकते हो, और मैं 10 मिनट तो पढ़ाऊंगा। अभी वोल्टेज रेगुलेशन और स्टेबिलाईजेशन समझाऊंगा आप लोगों को, और ब्रेक डाउन मैकेनिज्म समझाऊंगा, इसके बाद ही छोड़ूंगा। जो जो लीव कर सकते हो लीव कर लो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। I don't want to further continue this debate. I am just continuing. If we consider a rectifier with a suitable filter, then it will become a good source of DC output voltage. However, the main drawback, जो मेन ड्रॉबैक होता है वो क्या होता है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में क्या होता है, पावर सप्लाई में अगर डीसी वोल्टेज दिया जाता है तो अगर लोड रेजिस्टेंस और इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन होता है तो हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज वेरी करता है। हेंस हम लोग अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डीसी आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा। इन द सेम वे अगर लोड करंट हमारा लोगों का बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज गिरेगा, क्योंकि वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो रेक्टिफायर एलिमेंट में चोक करेंगे। तो हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिजायर्ड होता है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज, जो रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट वोल्टेज है, वो कांस्टेंट रहे इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशन इन द इनपुट एसी वोल्टेज और लोड। तो इसको इंश्योर करने के लिए एक वोल्टेज स्टेबिलाईजेशन व रेगुलेशन, जो भी बोल सकते हो, स्टेबिलाईजेशन और रेगुलेशन सेम बात है। तो एक वोल्टेज स्टेबिलाईजेशन और रेगुलेशन डिवाइस हम लोगों को लेना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज स्टेबिलाईजर। सो ऑल्दो हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे वोल्टेज स्टेबिलाईजेशन सर्किट हम लोगों को मिलेगा, पर इस चैप्टर में वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द जेनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबिलाईजर और वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा बात है कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। If the reverse bias is applied to a PN junction is increased at a point, it will reach when the junction breaks down and reverse current rises sharply to a value limited only by the external resistance connected in series. This specific value of the reverse bias voltage is called the breakdown voltage, and it is denoted by Vz.
It is denoted by Vz. After breakdown, a small further increase in the reverse current happens. The breakdown voltage depends on the width of the depletion layer. This width of the depletion layer depends upon the doping level. The following two processes causes junction breakdown due to increase in reverse bias. Number one is called Zener breakdown. And number two is called avalanche breakdown. So these are the two things here for breakdown. So these following two processes causes junction breakdown due to increase in the reverse bias voltage. One is called Zener breakdown, one is avalanche breakdown. If we draw about the output breakdown mechanism, so you will see the characteristics curve. So this will like this happen. This point is called Vz. This is minus V. This is plus V. And this is the diode current IF in milliampere. This is the reverse current IR in microampere. So this is the reverse bias side. And this is the forward bias. So this is called the breakdown mechanism. So thank you for being with the class and hope this thing has been enjoyed by you. So we will start about the Zener breakdown and avalanche breakdown in the next class, and then we will do the differentiate between the Zener and avalanche breakdown. So you can leave. Thank you very much. किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो और अगर नहीं है तो लीव कर सकते हो.